कई अपने ही बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, क्लास नहीं लगा रहे, क्लासें मिस कर रहे हैं, तो अब उनका क्या बोलूं मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल डिस्कस द माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। भाई क्यों करते हैं ये, पता तो चले बच्चा सही से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ना। तो जैसे हम आपका टेस्ट करते रहते हैं, बाबा टेस्ट लेते हैं, तो ये बताते हैं कि ग्रोथ इज नॉर्मल और नॉट। सो बेसिकली क्या है, यस, सो दे आर बेसिकली अबाउट द ब्रेन ग्रोथ, सो दे आर बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल एंड यस मोटर सोशल ग्रोथ। ओके ओके, सो बॉडी को तो नाप सकते हो टेप लेके, लेकिन ब्रेन को कैसे करेंगे? दैट इज गिवन बाय व्हाट, माइल्स। ओके, तो भाई देखो चार चीजें चेक करते हैं। एक तो करते हैं इसमें मोटर, कि बच्चा भाई चल फिर पा रहा है कि नहीं पा रहा, ठीक है, मोटर। ओके, और फिर करते हैं सोशल, कि ये बच्चा बाकी लोगों से बात करता है कि नहीं करता। और सोशल मीडिया में माँ बहने को रखी है आजकल, ठीक है, सोशल मीडिया महा 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 MC। और फिर एक चेक करते हैं लैंग्वेज, कि हमारा बच्चा बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, लैंग्वेज। ओके, नहीं बोला तो गूंगा, लैंग्वेज। ओके, सो लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट आर द मेन थिंग्स हियर, मोटर, सोशल और लैंग्वेज। अब भाई बात करना, मोटर में दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइन, फाइन मोटर, यू कैन से माइलस्टोन्स और स्किल्स, एंड ग्रॉस। तो याद करना, ग्रॉस मतलब ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या होते हैं, हाथ या पैर, मेनली लेग्स। तो बेसिकली किसके बारे में, इट इज व्हाट द लेग्स विल डू, सो दैट्स व्हाई लेग्स क्या करते हैं, चलना फिरना खड़े होना। सो बेसिकली फॉर सिट, स्टैंड, वॉक, इसे बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं इसे, ग्रॉस। सही है आपका। फाइन मतलब फाइन। तो हम जो अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर काम करते हैं वो करते हैं हाथों से, तो इसमें क्या आता है, मेनली हैंड्स। तो क्या आएगा इसमें, फाइन स्किल्स, हाथ, सो दे मेनली हैंड्स। अपर लिम्स यू कैन से हैंड्स, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, ओके, स्पून या कप होल्डिंग, यूज। फिर ग्रास्पिंग थिंग्स, ओके, ग्रास्प, होल्ड, ये सब किस में आता है, फाइन में। ओके, तो फाइन मतलब क्या, हाथ। सही है, तो हाथ, हाथ में कुछ पकड़ना या हाथ में कुछ पकड़ा देना, उसे क्या बोलते हैं, फाइन। और ग्रॉस मतलब ग्राउंड, मतलब पैर। सो ग्रॉस क्या चीज है हमारी, पैर। ग्रॉस क्या चीज है, पैर पैर पैर। ओके, चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लैंग्वेज से और सोशल से। इसमें आता है मजा, आपको दिलाते हैं मजा। आओ, लैंग्वेज मतलब बोलना, स्पीच। चलो तो शुरू करते हैं। ऐसे लिखना, 3 6 9 12, 3 6 9 12, और फिर 24 और 48। क्या है, मंथ्स, M M M M M, तो याद रहेगा। ओके, सो 3 6 9 12 24 48, 3 6 9 12 24 48। तो भाई देखो, पहले 3 में ये क्या है, चिड़िया बन जाता है। 3 में क्या करता है, कुक 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 कूइंग, क्या करेगा, कूइंग। तो क्या करता है, उ उ कु उ उ उ करता रहता है। क्या था, उ उ मतलब समझ रहे हो। तो आ नहीं करा, उ करता है। क्या करता है, उ, दारू वाला ऊ नहीं, कुकू। फिर 6 पे बोलता है ये मोनोसिलेबल। क्या बोलेगा, मोनोसिलेबल, मतलब एक ही वर्ड के उसको बार बार रिपीट करना। जैसे क्या, माँ, पा, क्या बोलता है, माँ, माँ, क्या बोल रहा है, माँ को बुला रहा है, माँ को। सही है, तो कब करेगा, 6 महीने पे, ठीक है। फिर 9 पे क्या होगा, बाय सिलेबल। तो अब क्या कर रहा है ये, बाय सिलेबल। क्या कर रहा है ये, बाय सिलेबल, मतलब अब ये 2 वर्ड, जैसे दादा पापा आजा, तो नाउ ही इज डूइंग दादा पापा। सही है, तो अब ये बाय सिलेबल। सही है, क्लियर। ओके, सो कई बुक में दे रखा है 5 और 6 पे, 5 पे बैबलिंग है, 6 पे मोनोसिलेबल है, पर कंफ्यूज मत होना, याद करना, पहले कुकू, फिर बोलेगा माँ,
फिर बोलेगा दद्दा पापा, ये क्या करेगा आपका बाय, मतलब डबल, डबल साउंड्स, ओके। फिर 12 पे 1 साल है, अब इसका बर्थडे है, तेरे हैप्पी बर्थडे पे हम करेंगे तेरी, तो इसका है हैप्पी बर्थडे। 1 ईयर का हो गया ना ये, 12 महीना 1 ईयर, तो क्या बोलेगा हैप्पी बर्थडे, क्या बोलेगा अभी हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो क्या बोलेगा ये हैप्पी बर्थडे, मतलब 2-3 वर्ड्स। जैसे क्या बोल रहा है बर्थडे, बर्थडे, गिफ्ट दे, गिफ्ट, गिफ्ट कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी, तो क्या बोलेगा पार्टी, गिफ्ट, ओके, बर्थडे। तो क्या बोल रहा है, 2-3 शब्द बोल रहा है, पार्टी देबे, गिफ्ट देबे, बर्थडे है मेरा, ओके। सो क्या बोल रहा है, 2-3 वर्ड याद रहेगा। फिर अब हो गया 24, 24 माने क्या, डबल हो गया ना, मतलब 2 ईयर्स, और ये हो गया 4 ईयर, ये हो गया 1 ईयर। तो याद करना 1 साल, 2 साल, 4, तो अब ये बनाएगा सेंटेंस, क्या बना लेगा ये पूरा सेंटेंस। तो याद करना 2 साल में पूरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे क्या बोलेगा, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, क्या बोलेगा माई नेम इज क्या है, माई नेम इज गुरुजी, और एज सम पीपल से टोटी पोटेंट, ये ऐसे वर्ड नहीं बोलेगा, ठीक है। और बाकी भी टीम के लोग हैं, जैसे अपने पारस है, सब है, ठीक है। सो गुरुजी, ओके, प्लूरी पोटेंट है ना। और 48 में अब बन गया भाई ये, देखो अब पहले क्या बोल रहा था बाय, अब बोल रहा है 2-3 शब्द, अभी क्या बना रहा है कहानी, क्या बना रहा है कहानी भाई, अब ये सुनाएगा स्टोरी, कौन सी, यस वेरी हॉट स्टोरी। ऐसे रात को मैं सो रहा था, मुझे कुछ आवाज आई, फिर मैं उठ के गया तो मैंने क्या देखा, समझ गए, तो क्या सुनाएगा स्टोरी। तो कब बनाएगा स्टोरी, मतलब मल्टीपल लाइंस, स्टोरी मतलब सेंटेंस हो गया ना, तो सेंटेंस क्या है, एक लाइन, माय नेम इज गुरुजी, और अब क्या बोलेगा माय नेम इज गुरुजी, आई एम द टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड पता है उस दिन मैं ऐसे पढ़ा रहा था, फिर ऐसे हो गया, देन दिस हैपेंड, देन दैट, तो क्या करा स्टोरी, तो क्या करेगा यस अब स्टोरी, ओके। और अब ये स्टोरी सुनाएगा, और फिर क्या होगा, प्यूबर्टी में स्टोरी बनाएगा, सुनाएगा नहीं, बनाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड, सही है ना। चलो तो शुरू करते हैं, मैं बोलूंगा आप बताना फटाफट से। पहले नंबर याद कर लो, 3, 6, 9, 12, ये सबको आते होगा 6 और 9 है ना। तो 3, 6, 9, 12, फिर क्या बनना है 2 ईयर 4 ईयर। चलो रिपीट करते हैं, 3, 6, 9, 3, 6, 9, ओके, 3, 6, 9, 12, 2 ईयर 4 ईयर, 3, 6, 9, 12, 2 ईयर 4 ईयर। फिर से 3, 6, 9, 12, 2, 4 ईयर। चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज 3, 3, 3, 3 क्या है, 3, 3, 3, 3, 3, 3 बोलो भाई 3। देखो हाँ, अब मैं वापस फॉर्म में आ गया, मेडिसिन पढ़ा पढ़ा के मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, सो आई लॉस्ट माई टच, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, मेडिसिन अगेन वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, और ऊपर से इतना लंबा खिंच गया। सो कू 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 कू, 3 पे क्या करेगा कू कू, सो 3 पे कू कू कूइंग। फिर 6 पे 6 मोनो, 6 पे मोनो, और 9 पे दोनों, सॉरी 6 9 हो गया दोनों, मतलब बाई, समझ आ गया। तो 6 पे अकेला, छक्का है ना, छक्का तो अकेला ही होता है, और 6 और 9 पे दोनों हो गए पाई, तो 9 पे दोनों, सो 9 is 2, 9 is 2, सो 6 मोनो 9 is, सॉरी 6 मोनो बाय इज 9 हो गया ना। सो 2 पीपल, 6 9 2 पीपल, सो छक्का एक ही होता है ना, 6 तो एक ही होता है, छक्का, छक्का क्या है अकेला रहता है, कोई साथ में नहीं होता। चलो वेरी गुड, बाय, देन 2 2 12 12 12 पे 12, 2 2 3 वर्ड्स, क्या आएगा 2 2 3 वर्ड्स, ओके। सो व्हाट इज एट 12 ईयर, 2 2 3 वर्ड्स, 12 पे क्या है 2 2 3 वर्ड्स, यस 2 2 3 वर्ड्स, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे बोलेगा, वेरी गुड, ओके। देन 2 ईयर पे 2 ईयर, वेरी गुड, वेरी गुड साबा, अश्विनी, कीर्तार्थ, भुवेश, भरत, आयशा, लॉकडाउन, राजू, प्रद्युत, आकाश, अंकित, चांद, सुल्ताना, शाह, वेस, गुड डॉक्टर, रियल गुड डॉक्टर, प्रजक्ता, धीर, अर्चना, भुवनेश, क्या बात है, तबेर, राजू, शिवू, सबने जवाब दिया, शाबाश, छा गए मेरे शेरों, आज आया मजा, ओके। चलो
बच्चे बड़े शांत शांत से हैं भाई, क्या हो गया? यस, माय नेम इज तोती पोतन, वेरी गुड। क्या बोलेगा? सेंटेंस। और 4 ईयर पे, 4 ईयर पे व्हाट इज गोइंग टू डू एट 4 ईयर? क्या करेगा 4 ईयर पे? कहानी, स्टोरी। स्टोरी तो याद रहेगा, तो फिर से करते हैं। कोइंग मोनो बाय 2-3 वर्ड सेंटेंस स्टोरी। वंस अगेन, कोइंग मोनो बाय 2-3 वर्ड सेंटेंस स्टोरी। कोइंग मोनो बाय 2-3 सेंटेंस स्टोरी, दैट्स इट। नॉट सॉरी, स्टोरी। ये सॉरी कौन बोल रहा है भाई? चलो स्टोरी, कहानी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सोशल की। सोशल बेसिकली इज अबाउट अदर पीपल, अदर पीपल, ओके। तो अदर पीपल, सो अगेन यूज माय फॉर्मूला। 3 तो हमेशा आएगा, सो 3 तो है ही है। सो नाउ 3 का हाफ कितना होता है? 3 का हाफ दैट इज 1.5। सो 3 month, this, then 6 month, then 6 month, okay, then 6 month, then 6 month, then 9 month, then 9 month, then around 12 month, 12 month, okay, okay. So make it like this once again बच्चों। So once again, 1.5 month, 3 month, 6, 9, 12, दोबारा बनाओ भाई। Yes, puberty based story, yes, very good. So 1.5 month, 3 month, this. So 1.5 month is basically what? 1.5 month is basically 4 to 6 weeks. कितने हो गए? डेढ़ हो गया ना, डेढ़ महीना कितना होता है? 1.5 month is around 4 to 6 weeks. So 6 to 8 weeks भी बोला है बुक्स में। So first is this time he is about other people, people, that is identity, कहता है ना आईडी बनाता है खुद की। So first is social smile. So social smile, answer is 1.5 month, 1.5 month, okay. Then smile at mother or recognize the mother. So mother smile or recognize, so mother recognize. So what happens now? Recognize and smile. So now he smile looking at mother. So first is start to smile. Start to smile कब? 1.5। मदर को देख के स्माइल, और अब खुद को देख के करेगा। नाउ स्माइल एट मिरर। समझ में आ रहा है? सो स्टार्ट स्माइलिंग 1.5 month, smile at mother, and that means he know she is the female who is my mother, means no कि she is the female who is taking care. Then 6 पे मिरर, तो याद करना 1.5 month स्माइल, जस्ट स्माइल। 3 month मम्मा, मम्मा स्माइल, सो माँ को देख के स्माइल करता है, ठीक है। और ये कब करेगा? पूरी जिंदगी करेगा, पूरी लाइफ, टिल कुछ और ना हो, है ना। एंड देन 6 month, till 6 month what happens? Yes, at 6 month there is at mirror, तो that means तीनों स्माइल है। सो फर्स्ट इज स्टार्ट स्माइल, स्टार्ट स्टार्ट स्माइल, स्माइल मॉमा, मॉम, एंड देन मिरर, देन मिरर। अब समझ में आ गया? देन मिरर, ओके, मिरर। सो आर यू क्लियर? चलो नाउ 9, ओके, क्लियर? 9, ओके। सो 9 पे व्हाट हैपेंस? रिमेंबर 9 मंथ पे क्या होती है? डिलीवरी, एंड द बेबी कम्स आउट। सो क्या होता है 9 मंथ? डिलीवरी, याद रहे 9 मंथ व्हाट हैपेंस? डिलीवरी करना, एंड द बेबी कम्स आउट। सो 9 मंथ पे ही से निकल, 9 9 9 9 9 9 ना 9, तो क्या बोलता है? निकल, पहली फुर्सत में निकल, है ना, LKD निकल, पहली फुर्सत में। तो क्या बोलता है? वेव बाय बाय, निकल बाय। तो पहले स्माइल करता, बोल रहा है निकल टाटा बाय बाय, सो वेव बाय टाटा निकल। तो क्या बोलता है? निकल, निकल कब बोलता है? निकल 9 पे। सो निकल मीन्स गो आउट, ओके। सो दैट इज 9 बाय बाय, ओके। निकल बाय, निकल पहली फुर्सत में निकल, है ना। सो निकल, सही है। क्या बोल रहा है? निकल। किसी को अगर इसका वो चाहिए तो आओ, इसका मीम भी आपको दिखाता हूं। क्या करना है? इसको निकालना है। चल बे निकल बे, साले किधर गया मेरा फोटोज? वेयर आर माय फोटो? सी देखो किसने मेरा मीम बनाया था, मैं पता नहीं कहां गया। आई माइट हैव पुट सम अदर फोल्डर। सही है, चलो। तो समझ में आ गया सबको? कैरियर टाइपिंग की फाइल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। यस, ओके। सो आई होप इज क्लियर। चलो, सो वी आर डूइंग वेल। चलो, सही है। देन एट 12 व्हाट हैपेंस? 12 पे, 12 पे। नाउ व्हाट हैपन एट 12? 10 to 12, 10 to 12 is what?
ही वांट टू प्ले अ गेम, पी कबू, वो करते हैं ना पी कबू, छुपन छुपाई। सो कब करेगा 10 से 12, ओके 10 to 12। सो नाउ ही विल ट्राई टू हाइड, ऐसे पी कबू ऐसे। सो नाउ ही इज स्माइलिंग व्हेन यू ट्राई टू हाइड। सो हाइड एंड सीक तरह क्या है, पी कबू, ठीक है, पी कबू, ओके। सो पी कबू, बू का पी कबू, ओके क्लियर। सो दैट मीन्स ही इज नाउ yes playing a game, that is which game, yes peekaboo game, okay, that is hide and seek, okay, like okay. So peekaboo what age, 10 to 12, peekaboo 10, okay. Now there are two very important that you should remember. One is 7 month, one is 15 month. So first is understand the fear is causing anxiety. So 7 month and 15. So remember 7th day, what is the 7th day of the week? 7th day is what? Is Sunday. Sunday who come? Holiday, so relatives come home. Relative come home. And when relative come home, the baby will see, कौन आ गया ये कौन है? So now they have fear, stranger anxiety. Stranger anxiety. So now the kid will start to cry, okay? And at 9 month क्या बोलता है? निकल बे, निकल साले stranger. So 9 month पे क्या बोलता है? बाय, निकल जा साले, भाग जा यहाँ से, सही है। सो 7 मंथ स्ट्रेंजर एंजाइटी, 9 मंथ निकल भाग भाग यहां से। सो 9 मंथ ही वांट टू रिमूव, ओके। नाउ डबल द 7, 15 अगेन एंजाइटी। नाउ विच एंजाइटी इज दिस? इज नॉट स्ट्रेंजर, न्यू पर्सन, इट इज लॉस ऑफ ओल्ड। सो हियर व्हाट? फियर ऑफ न्यू पर्सन, एंड हियर इट इज फियर ऑफ लॉस ऑफ ओल्ड, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन, दैट इज व्हाट? फियर ऑफ loss of relative or family. So now when the mama goes out or papa goes to office, he start to cry, है ना, तो ऐसे रो रहा है, क्या ये? सेपरेशन एंजाइटी। तो याद करना 7 पे स्ट्रेंजर एंजाइटी, क्यों? संडे को 7वां दिन हफ्ते का रिलेटिव आया और उसने दिमाग का दही कर दिया। सो स्ट्रेंजर एंजाइटी, ओके। एसेस करोगे तो फिर सेपरेशन भी तो है ना। सो 7th इज स्ट्रेंजर एंजाइटी, ओके। And 15, how to remember? See, 14th Feb क्या होता है? मिलने का दिन, वैलेंटाइन डे, यू मीट, है ना। और फिर 15 को कट गया, छोड़ के चला गया या चली गई, कट गया, सेपरेशन हो गया। तो कब होता है सेपरेशन? 14 के बाद, क्योंकि कई बार 14 को 14 का काम नहीं होता तो सेपरेशन हो जाती है। सो रिमेंबर 15th इज सेपरेशन एंजाइटी। 15th इज separation anxiety. What is 15? Separation anxiety. 7 is stranger. Okay. So are you able to understand and remember? Yes or no? सबको याद रहेगा? मस्त बताया, मस्त क्लियर है। तो 14 के दिन प्यार, लव सब होता है, मीट, है ना, मिले, और फिर 15 को कट गया, लॉस्ट, ब्रेकअप, ब्रेकअप। समझ में आया सबके? तो कब होता है ब्रेकअप? 14 को नहीं, 14, okay. I'll speak English यार, okay, fine, okay. So what day breakup is there? On the 15th breakup is there. So 15th breakup is taking place. Are you clear? चलो, so everyone is able to understand this, yes or no? Very very good, okay. So let's start the session once again, okay. So let's revise it before going any further because one question is expected from this, okay. चलो, so शुरू करते हैं एक बार। I hope you all will tell me. So क्या करना है? 1.5, 3, 6, इसमें घुसे कर दो, 7, 9, 10 to 12 and what? 15 हो गया। So 1.5, 3, 6, 7, 9, 10, 15. So start. What is शुरू के 3? Smile. शुरू के 3 स्माइल, ओके। सो 3 आर स्माइल एंड दिस इज दिस। सो लेट्स स्टार्ट। 1.5 सोशल, स्माइल तो भी चाहिए। 3 3 3 3 3 3 3 मामा, मोमी, मामा, माँ, ओके, माँ, क्लियर। 3 पे माँ। 6 6 6 6 6 यस, खुद का थोबड़ा देख रहा है, सीइंग द मिरर, मिरर, दैट इज सेल्फ। सो मिरर इज सेल्फ, ओके। सो मिरर इज सेल्फ, मिरर इज सेल्फ, वेरी गुड, ओके। सो वंस अगेन 1.5 सोशल, 3 मॉम,
6 mirror, 6 mirror, 6 is mirror, 6 is mirror. Okay, and once again, yes, 6 is mirror. Okay, चलो 6 is mirror. Very good, very good. All are doing well. Now इनको मैं अलग बनाता हूं, 7 and 15. ये क्या है? एंग्जाइटीज. 7, 15 आर एंग्जाइटीज. 7, 15 आर एंग्जाइटी. What is 7? What is 7? Yes, Sunday. कौन आया? कहां आया? स्ट्रेंजर का. Stranger. 7 is stranger. 7 is stranger. 7 is stranger. 7 is stranger. 15. What is 15? 15, 15, 15. What is 15? जुदाई, जुदाई. तो 14 को हुआ वो, है ना, वाला आई 14, और फिर 15 को हो गई जुदाई, सेपरेशन. तो पहले 14 को वो हुआ, फिर 15 को हो गई आपकी जुदाई, सेपरेशन. सो सेपरेशन एंजाइटी. ओके, सो यस, आई एम यूजिंग सम हिंदी वर्ड बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दिस last session in Delhi for making very good rapid revision with rhyming. Okay, so it will take time for me to learn English rhyming with these words, so don't worry, please don't feel bad. Sometime learning a language always benefit. Like I keep learning, if I get some word, even Tamil, Telugu, Russian I use, so might help us. Okay, so it's yes. So पहले इसकी हो गई जुदाई, जुदाई, और 14 तो पता ही है आपको, 14. सो जुदाई और 14 का वैलेंटाइन. ओके, सेपरेशन, इजी. यस, अब स्ट्रेंजर को क्या बोलता है? निकल, बाय बाय, भाग साले, निकल यहां से. तो बाय बाय क्या बोलता है? बाय बाय क्या बोलता है? निकल, है ना, ऐसे याद है फोटो, निकल, निकल, है ना, बाय बाय, निकल बाय. सही है. एंड रिमेंबर, डिलीवरी अकर एट 9 months. सो व्हेन द बेबी कम्स आउट एंड से बाय बाय टू ममा, ममा यूट्रस बाय बाय, आई एम आउटसाइड दिस. ओके, एंड यस, हाँ, निकल, है ना, LWDE, LWD, पहली फुर्सत में, है ना, निकल, चलो. Now 10 to 12 is what? So 10, 12 is what thing? It is basically what? What is this 10, 12? Okay, it is a game, peekaboo. Peek-a-boo. That is like a hide and seek. Hide and seek. So hide and seek is the game. Very good. Peekaboo, peekaboo, peekaboo. Very good. Yes, I will pass. गंदी बातें नहीं करना. ओके, 14 के बाद जुड़िया जो भी है. अच्छा, चलो. Very good. Okay, चलो. So let's move next. Okay, now we are over with the months. Now years will start. Now what will start? Year. So what is the double of 15? 30. So 3 year. 3 years. So we'll discuss 3 year. We'll discuss 3 year. Okay. So let's start the 3 year. Okay. Start the 3 year. Okay. Okay, yes, peekaboo, very good. 3 years. So understand, how many colors are there? Rods, cones. Remember cones? So there are 3 colors. Remember, 3 color: red, green, blue. 3 color. Then how many gender are there? How many gender are there? कितने gender है बताओ? How many gender are there? Tell me. Gender. How many genders are there? Question for you. How many gender? How many genders are there? कलर तो 3 हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू. रेड, ग्रीन, ब्लू. How many genders are there? Number of genders. Gender. How many genders are there? बताओ भाई, how many genders are there? Gender. Very good. 3 genders. Male, female और 6. मतलब सॉरी, and transgender, T. So 3 gender: male, female, him, her and they. Third person. तो कितने नाम है? 3 नाम. First person, second person, third person. So remember, color, gender, name. 3 years. Color, gender, name. Occur at 3 years. Occur at 3 years. Very, very good. Clear? सो पति पत्नी वो, अबे वो में एक और बंदा होता है, वो में एक और लड़की या लड़का होता है. क्या बोल रहा है? पति पत्नी वो. जी. सो यस, ओके. सो शी इज मेल, शी मेल. सो वेयर डू यू सी शी मेल? यू सी शी मेल. वेयर डू यू सी? यस, मल्टीपल प्लेसेस. चलो. सो व्हाट एज यू लर्न दिस? यस, ओके. नाउ बचा 4 and 5. 4 and 5 year.
So understand, now he is able to know the gender. So what age the guys know they are male or female? This 3 year. So that's why 3 year what start? They develop what? The Oedipal and what complex? The Electra complex. That is psychiatry. So Oedipal and that is mom is Oedipal, papa, dad is Electra complex. So daughter are attracted to dad Electra complex because now gender they recognize. I am a male, she is a female. So that's why a male child is attracted to mother, female to the father. Calls what? Oedipal and Electra. Which age? 3 years. So 3 years. Okay. Clear? Thailand. Yes, Gaurav. Thailand. Okay. Chalo. Fine. Okay. Now at 4 year and 5. So understand, now he know the gender. So now he know what is there between the legs. So he know what is there. G. This is G. वो पीछे नहीं है, आगे G. Gender. Now what is next to the gender? What is just behind? We have potty. So he is bowel control. And then bladder control. Remember, bladder control comes later. Why? Because potty is heavy. Is solid, easy to control. Like I can control the remote better, but liquids difficult to control. Liquids can leak out. So that is why yes, he can do. he क्या group क्या बोल रहा है? Group में okay, I will group play करता है. So that's why 5 year is bladder control. Okay, 5 year. Okay, so that's why what happens if it is not proper, he can pass urine. So that's why after 5 year bedwetting is abnormal. So up to 5 year bedwetting, what is the other name? Nocturnal enuresis. So till 5 year nocturnal enuresis is normal. Now it is abnormal. So after 5 year nocturnal enuresis is abnormal. It is abnormal. So what is abnormal? Nocturnal. Okay, and now we need treatment. So treatment, okay, remember the best method is which one? So what is the treatment? Best. So what is the best method? रात को सुसु कर रहा है तो एक किस एज तक था? 5 year. That day I was taking class and asked someone says sir normal till 25 year. 25 year मैं पागल हो गया. Don't tell your problem in public place. It is 5 year. Okay. Yes. So best is, so main is bed alarm method. What happened? The moment child pass urine, the alarm rings and that sound stops the urination because of high sympathetic sphincter close, and then he wake up and realize this passing urine. That is called as what? Bed alarm method. So it is the best method. Okay, and if not control, it's 90. It's the most successful method. Most, you can say, successful. Okay, and best is non-pharmacological. Okay, if not control, then we use drug. If not control, we use nasal desmopressin. And we know desmopressin is what? ADH. And ADH make less urine. It make less urine. Or imipramine. Okay, so imipramine. Okay, fine. Now, what is preferred? Desmo. Is why? Because it is nasal spray. So that's why you can just spray it in the nose and it will be working. Or imipramine. So bed alarm method. So let's please help me revise everything, kids. मेरे अच्छे प्यारे बच्चों, let's revise and I need your help for revision. Okay, so I'll revise and you help me. Okay, so first we'll revise the milestone once again. 1.5, 3, 6 months. Then tell me what is 7, 9, 10, 15. So do it fast and then I'll ask the years. And here I write the year. 3 year, 4 year, 5 year. Imipramine is not used much, but we will use. Okay, chalo. So start. What is 1.5? These all are what? Smile. They are mainly smiles. 1.5 here. Social mom mirror. Social mom mirror. Very good. Social mom and mirror. 7. At 7, what is going to occur? 7.
Tell me at 7 what occurs. 7. 7 is anxieties. They are anxiety. Which one? Stranger, ajnabi. Oh, ajnabi. Oh, ajnabi. Stranger. 9 is what? Is anxiety. 9 is what? 9. 9 is निकल, बाय निकल बे स्ट्रेंजर, भाग यहां से. सो उसको निकाल देगा. वेरी गुड. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. ऑल आर लर्निंग वेरी वेल. ओके, चलो. नाउ 10. व्हाट इज 10? 10. पी का वो पिक, एंड दिस इज स्ट्रेंजर. सॉरी, सेपरेशन. क्योंकि 14 को हुई थी वो, 15 को हो गई वो. सही है. सो 14, 15 इज सेपरेशन. वेरी गुड. सेपरेशन एंजाइटी. सेपरेशन एंजाइटी. ओके, वेरी गुड. फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया. वेरी गुड. चलो. यस, ही कैन प्ले गेम यार. ये लो, पीकाबू गेम खेलेगा बस. चलो, 10 से बात. नाउ 3 ईयर. 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 3 ईयर्स. 3 ईयर्स. 3 ईयर्स. 3 साल में क्या करेगा लौंडा हमारा? 3 साल में क्या करेगा? 3 साल में. यस, 3 ईयर्स. 3 ईयर्स. वेरी गुड. जेंडर, कलर, नेम. So he can tell the color. Lead, yellow. समझ रहे हो? Tello, yellow, lead, blue. Okay, clear है? तो क्या बोलेगा वो? कलर. ओके, तो lead. ओके, एंड 4 ईयर क्या करेगा? 4 ईयर. ओके, potty control. This is susu. That is urine control. So potty control, susu controls. Potty, susu control. Okay, very good. Now you have all mastered this concept. I'm so happy. Bas, that's what make me so proud of you people. You are very, very great people. Chalo, let's start. Now we see the gross milestones. Gross milestones. Now I'll teach in a very simple way. Understand this thing. Okay, clear? So first is we'll learn neck holding. Okay, so write like this. Okay, so first 3 month is neck holding. So it is what thing? It is neck holding. So he can do what thing? He can do neck holding. Okay, so he can do neck holding. Okay, so can do neck holding. Okay, clear? And 5 month rolling. Okay, so neck hold, can hold the neck. So if you lift the baby something, the neck will not fall. Example, lift, the neck fall. Now he can hold the neck and he can roll. Now write like this. Okay, so first a person will sit, then he will stand, and then he will walk. So remember, you are sitting. Okay, sitting. So baby is sitting, then baby will stand, and the baby will then start to walk. So walk. So remember, sit, stand, walk. So please write down sit, stand, walk. Rapid revision will end in 5 June. Okay, clear? We have already finished 11 subjects. Okay, 8 are left. Okay, they'll be covered in the remaining 5-6 days. So chanting will occur, image based sessions will occur, question discussion will occur, and yes, I will do a super fast revision also toward the. So after 15 we'll have test and everything repeated very fast. Okay, so we'll do. Okay, so sit, stand. Okay, clear? Yes, sit. Right here, support without support. Support without support. Okay, and everything is month in month. So remember, very simple. 6, 8, 9, 12, 9, 12. Okay, so 6, 8, 9, 12, 12, 15. So can you remember it? 6, 8, 9, 12 and 12, 15. So sit is what? Sit. What is the mnemonic of sit? Sit. बैठने का. 68. You can also 6, 8. 6, 8. Also sound like what? 6, 8. Sit.
sit x, not shit. 6, 8 is sit. With support 6, without support 8. 6 and this. Speeds 2 days. Speeds 2 days. Okay. So आज will day 1 and day 2 I'll do. So today we'll do this. Then I'll do cardio and do GIT jaundice. Okay. Then the what? Neonatology, that CNS, epilepsies, etc. and a bit of respiratory, etc. I'll take on second day. Second day will take 3 hours. Today time is less because what? Other sessions are there. So we'll do jaundice today. We'll do cardio, murmur, etc. All this. Okay. So we'll have 2 classes. Okay. So one more is left. Today is first class, 2 classes. Okay. Last time also I revised. So don't worry. So this is not something I have not done. I've done this. Okay. Chal. Okay. So sit at. Okay. So याद करना sit. Okay. याद करना sit. Okay. Clear. And remember 69 नहीं है. 69 नहीं है, 68 है. ओके 69 नहीं है, 68 है. 69 तो लाई होता है ना, लेट के होता है ना 69 तो. ठीक है. 68 is sitting, 69 is lying. Okay. And that is the case. Okay. So please remember it's 69 not 68. Okay. सही है. तो 69 is not for sitting, वो तो lying में होगा ना. 69 is lying, 68 is sitting. Then stand क्या है? 9 और 12. Stand is 9 to 12. So remember कैसे याद करेंगे? 9 to 12 you are in OPD or OT, or you are watching and you are standing. So are you standing in OPD or OT doing the surgery? 9 to 12 you are standing. 9 to 12 you are standing. 9 to 12 you are standing. Okay. And then walk 12 to 15. 12 to 15. Walk is 12 15. 12 15. 12 15. Walk is yes 12 15. Okay. So 12 to 15. 12 to 15. Okay. 12 to 15. Okay. So I hope is clear. So 12 to this. So एक बार याद करते हैं, फिर से बोलो. Sit. What are the mnemonics? Sit, sit, sit. Sit, stand, walk. Sit, stand, walk. Tell me. Sit, stand, walk. Tell me sit, sit, sit. Sit mnemonic. Sit, sit, sit. 68. 69 मत बोलना, पहले कह रहा हूं. 69 is not sit. वो कुछ और होता है. चलो. Then stand. 9 12. 9 12. वेरी गुड. क्या बात है. ये ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे. देन वॉक वॉक वॉक, चलने का फिरने का. वॉक वॉक 12 to 15. वेरी वेरी गुड. ओके वेरी वेरी गुड. देखो होगा ना याद. क्लियर. सो वेरी वेरी गुड. यू आर ऑल डूइंग परफेक्ट. ओके चलो वेरी वेरी गुड. ओके ये हुई ना बात. चलो सबको याद हो गया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दैट्स व्हाट माय main mission is. Make you all learn while you are enjoying. So are you enjoying? And learning? Okay. So are you enjoying and learning? Okay. And sorry for that boring medicine classes. Again मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत बोर रहता हूं, तो मैं क्या करूं. ठीक है. So I am myself very bored in medicine classes. Clear? So, and point is it's difficult to teach online. Okay. It's difficult to teach online. Clear. Medicine is such vast subject. It require face-to-face interaction, people interacting. Okay. मजा आया ना. Talent है भाई. So revision is my main strength. You all know that. I can revise all 19 subjects. Okay. So very very good. Okay. Thank you. Thank you. So no one will teach you milestones like this. Okay. चलो. Now 15 पे क्या हो गया? He can walk without support. Now what do you expect next number? So remember 9, 12, 15. What is the next number? 18. 18. What is 18? 1.5 year. 18 is 1.5 year. 1.5 year. Now what happens at 18? Will he walk or walk fast? What is walking fast called as? So walking fast. Okay. Walking fast. What is it called as? Walking fast. Very good. Running. And even can climb stair by creeping, crawling. Okay. So running. So remember now he is not walking. He is running. Then what come next is now what is increase? 24. That is 2 years. 1.5 month. Next is 2 year. Next is 2 year, 2 year, 2 year. Next is 2 year. Now 2 year. Now running, walking, one leg on ground. So remember
and all walking, standing, one leg or two leg are on the ground. So how many legs are on the ground in walking, running? So walking, running, one leg. At 2 year, both legs in air. What is it called as? Both leg in air. Both legs in air, out of ground. So one leg on ground. So what do you say when both legs are up? Both legs are up. अरे दोनों ऊपर चले गए, दोनों पैर, क्या बोलते हैं? What do you call when two legs are in the air? Two legs हवा में चढ़ गए. Yeah, jumping, jump. And now that means he can even climb the stair, climb the stair, climb the stair. So remember, now he can do a proper climbing of the stairs, climb the stair. Even now he say, अब तो अपन माइकल जैक्सन बनेंगे. Walk backward. देख रहे हो 2 साल में इसकी बुद्धि पलट गई है. Walk backwards. So now he can walk Michael Jackson. देखा वो moon walk. So he can walk backwards. Remember, अब ये करतब कर रहा है. 2 year पे करतब. So that's why 2 years is doing all the magical show. Like he can jump, yeah, jump in the air, climb the stair and walk backward like a chudel, ghost, demon. And 3 year पे 3 year, 3 tricycle. So 3 पे tricycle, 3 पे tricycle, 3 पे gender. So at 3 tricycle, 3. So ट्राईसाइकिल कब चलाएगा हमारा लौंडा? ये चलाएगा, यस, ओके. हाँ, किका बॉल भी कर सकता है उस पे जब एक पैर हवा में उठाई रहा है तो, ठीक है. सो द मोमेंट ही कैन लिफ्ट वन लेग इन द एयर, ही कैन किक अ बॉल आल्सो, ओके. अब आप बोलोगे सर 4 ले लो, ऐसा कोई पूछता नहीं है. 4 ईयर ही कैन डू हॉपिंग, ही कैन डू हॉप इन वन लेग, हॉपिंग, ओके, क्लियर, होपिंग, ओके, ऑन वन लेग, ओके. एंड 5 ईयर स्किप द रोप. ये कोई नहीं पूछेगा, स्किप रोप कहता ना वो. सो ये कोई नहीं पूछता, छोड़ दो. चलो तो इसको रिवाइज करते हैं. यस, ओके. लौंडा, लौंडिया, लड़का, लड़किया, ओके. सो हम जेंडर न्यूट्रल प्लीज, ओके. सो नेवर एवर एक्यूज मी, ओके. फाइन, यस. हॉपिंग एंड डाउनस्टेयर्स, ओके, एंड ऑल्सो डाउनस्टेयर्स. यस, ही कैन नाउ क्लाइम डाउन, ओके. डन. अरे भाई प्रोजेक्टा, सॉरी, आई एम नॉट जेंडर बायस, ठीक है. आप सब लोग मेरे लिए इक्वल हो, ठीक है ना. चलो, वेरी वेरी गुड. चलो अब रिवाइज करते हैं. आ जाओ, बताओ भाई फटाफट से, ओके. मैं बोलूंगा आप बताना, ठीक है. रैंडम पूछूंगा, रैंडम, ओके. मोटर बताना है ग्रॉस, ओके. सो 9, 12, 15, 18, 24, 3 ईयर, ओके. यही बहुत है, ठीक है. सो 9 month, 12 month, 15 month, 18, 24, this. Tell me, 9 month, 9 month, 9 month, 9 month, motor, 9 पे. What is he doing? Sitting is 6, 8. 9 is what? Arey, I am also joking, Prajakta. Why take tension? So you are joking, me joking, all joking, lots of jokes. Tell me. चलो, अरे कहाँ चला गया भाई? क्लास शुरू हो गई, मिस कर दी क्लास कई बच्चों ने. वेरी वेरी बैड. डोंट एवर मिस द क्लास. ओके. बताओ भाई, आंसर भर दो भाई, आंसर दे दो, आंसर दे दो. आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. क्या बात है? यस, स्टैंड, लौंडा खड़ा हो गया, बट विद सपोर्ट. तो याद करना, खड़े होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बाद में हटा भी सकते हैं. सो इनिशियली खड़ा किससे होता है? सपोर्ट से. फिर बाद में बिना सपोर्ट के भी हो सकता है. चलो, कई चीजें बिना सपोर्ट के भी होती हैं खड़ी. चलो. 12 months, yes, stand without support and also walk with support. 15.
यस इट इज वॉक विदाउट सपोर्ट। क्या बात है, वाह 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 वाह, आहा आहा, मौज कर दी, मौज कर दी, बच्चों ने हमारे मौज कर दी। आई नो यू विल पास, ओके। And it's an important topic for the past 2 years. No question came from milestones, and this time I know milestone is going to come. Milestone is going to be a question. Very very good. क्या बात है, very good. All are right, perfect. चलो अब बता दो 18 मंथ, 18 मंथ क्या होगा 18 मंथ। अरे भागो रे भागो, रन भागो, 18 पे रन, 18 पे रन, 18 पे रन, 18 पे रन, ओके चलो। 24 पे jump, jump or steer, jump and steer, jump and steer, very very good, okay। And finally 3 years tricycle, tricycle, okay, tricycle, okay चलो। so now last is gross motor skills, उसकी बात करेंगे, gross motor skills, okay हो गया। fine motor, basically hands। so before that let me tell you something, please try to understand, okay। so first is we have hands, okay, hands, okay clear। so we are having the hands, okay, so please understand, okay। so first is this is right hand, this left, this is called as dextro levo, okay। and this is ulnar side, so what is this part of hand called as, this is what side, ulnar side, and this is what this is the radial side, okay। so this is supplied by radial nerve, this is by the yes radial nerve, this is by the ulnar nerve, okay, ulnar nerve, are you clear now, fine। and this is the pinching, ऐसे pinch, so how do you lift a pen, this is pinch or pincer, pincer is this, चीटिंग कर रहा हूं भाई ऐसे, ये क्या है इसका, पिंस, बोला मत क्या बनाया भाई, मेरे से बनता नहीं है, ये क्या करा, पिंच, ओके मींस pinch and lift, okay, pincer, are you clear। so ulnar radial pincer, ulnar radial pincer, so let's start, and if you do it you will be so proud that we have done, so right 4 5 6 7 8 9, so write down 4 5 6 7 8 9, m m m m, so let's start 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। so obviously tell me a very simple thing, I give you this chocolate or something else, so let's say this bottle, okay, so initially a child has very poor motor control, so he cannot lift object with what, with one hand, so he need two, so he need two hand, that is he need two hand to move any object, so that's called what, bidextrous, that is two, bidextrous approach, okay। and as the muscle power increase, coordination increase, he can hold with two hands or one hand also, one hand, that is unidextrous, single, unidextrous, that is 6 months, sorry 6 months, so remember 6 is uni, मैंने कहा था छक्का अकेला होता है 6, वही बात है, so 6 is monosyllable, 6 is uni also, unidextrous, and 4 month is bi, 4 is bi, okay 4 is bi, and 5th is see, two hand one hand, two hand one hand, two hand one hand, two hand one, so now at the age of 5 he is able to move the object from one, so transfer, he can move the object, so now remember he can move, so first he hold with two with one, and he can also move, so first he hold with two, then he can move, so he can move the objects, so he can lift a ball and move, that is move, transfer, तो 5 पे होगा transfer, 5 is transfer, remember, so 4 is bi, 5 is transfer, 6 is uni, so once again bi transfer uni, bi transfer uni, bi transfer uni, by transfer uni, okay। 7 month, 8th 9th are all your graphs, that is
hold objects. That means hold. So they are all grasps. They are all grasp. Okay, what does grasp means? Holding. Holding. So first he will try to hold using the lower part. So lift things like this. So he's using which part? The lower part of the palm. That is this lower fingers. So he's using what? Index and little finger. This is called as what? This is called as the ulnar grasp. Okay, so what he start with? Ulnar. So you, ulnar. Then he can hold object from the upper part of the hand. Okay, that is upper three fingers. Okay, that is called as what? That is called as the radial grasp. So he's using what? Palm and fingers. Palm and finger. Lower fingers, upper fingers. Once the strength develop, he can lift using only two fingers. Only two fingers. That is pincer. Pincer. So let's start now once again. Approach and transfer is 4, 5, 6. Grasp is 7, 8, 9. Grasp is 7, 8, 9. Grasp is 7, 8, 9. Okay. See, understand, there is bit controversy, but it is said ki uni transfer is after 6 and by transfer is after 5. Don't get confused. So understand, hold object with two hands and then shift by dexterous transfer is 5 and one hand transfer is 7. So don't get confused, please. Okay. So for transfer, you can have both 5 and 7. My advice, you can write 5. Are you clear? Earliest transfer is 5. Earliest transfer is 5. Got the idea? Okay. अरे बता रहा हूं ना, अर्लीस्ट ट्रांसफर इज 5. ओके, अर्लीस्ट ट्रांसफर. ओके, डोंट डाउट द डाटा, इट इज वेरी वेरीफाइड डाटा. ओके, सो वंस अगेन लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, टू हैंड बाय, मूव, ट्रांसफर 5. ओके, देन सिंगल हैंड अप्रोच, uni. So once again, 2 transfer, uni. So 4, 5, 6. Then lower grasp like this. This is ulnar. Upper grasp, radial. Then two finger, चुटकी. चुटकी, चुटकी में पकड़ा. कैसे? चुटकी में पकड़ा. चुटकी. और इस चुटकी, ठीक है, चुटकी में पकड़ रहा है ऐसे. कुछ और ही लग रहा है, छोड़ो, मिटा देता हूं. So चुटकी में पकड़ा, pincer grasp. Okay, so it is 9 month. It is 9 month, and it is initially very weak. Weak means what? Immature. Weak means immature. That means what? Object keep falling. Means object falls. तो क्या करेगा? उठाएगा ऐसे, गिर गया. उठाया, गिर गया. उठाया, गिर गया. इसे क्या बोलते हैं? This is called as the immature pincer. Immature. And at 12 months, it become mature pincer. Now he can lift or move the object. So it is mature pincer. Are you clear? Are you clear? Are you clear? Clear? So let's revise. Let's revise. Okay. So, and that means can hold pen. Okay. In this case, so he can hold pen or even what? Spoon. Hold like this. Okay, so you can hold the pen like this. Okay, so now let me ask you, or tell me, I'll write. Okay, so help me. So start with 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Help me बच्चा लोग, help me, I need your help. Tell me. वेरी गुड. चलो, वाह. यस. सो ये तीनों ट्रांसफर वाले याद कर लो, या वो ट्रांसफर या यूनी मोनी. तो ये क्या है? आपका अप्रोच है, सारी अप्रोच है. सो दिस इज बाई, दिस इज ट्रांस, एंड दिस इज, सी देखो, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल. ओके, चलो लीव इट. सो बाई ट्रांस यूनी, बाई ट्रांस यूनी, बाय 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 ट्रांस यूनी. फिर 7, 8, 9, 10. These two are what? These two are pincer. This is ulnar, this is radial. So understand, two hand transfer, single hand, two hand transfer, single. So पहले दोनों हाथ से पकड़ा, फिर एक हाथ से पकड़ा,
फिर नीचे से पकड़ा, ऊपर से पकड़ा, 2 उंगली से पकड़ा। ऑप्शन में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ही इज होल्डिंग द फेस लाइक दिस। समझ में आ गया। देन ही होल्ड योर लेट्स से air with one hand, okay, then he hold with lower hand, then upper hand, then pencil, that is 2 fingers, okay. Immature and mature. 9 is immature, 12 is mature. Very good, very good, very good. So आगे चलते हैं। At 15 month he can hold the pen, so now he can do scribble, he can do scribble, he can do scribble. So what age he can scribble? 15 month. What age he can scribble? 15 months. Scribble 15. 12 month pen. 12 month pen. 15 month scribble. 15. Even cup. Hold cup without spill. So cup he can hold and move without spilling. Cup without, use cup without spilling. Now cup is easier to move, but a spoon is difficult. So take 18 month for spoon without spilling. Spoon without spilling. So remember 18 spoon without spill. 18 spoon without this, okay. Now what is left after 18? You know there is 1.5 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. 4 year, 5 year, 6 year. So now years are there. Now years. So 1.5 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year. 2 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year. So let's start. First, what is the definition of a line? It is between 2 points. So it is between 2 points. So line. So line. First line between 2 points A and B. Remember? So you can connect the two, make a line. Make 4. Remember square has 4 sides. So square and cross has 4 sides. So they have 4. So he can make 4. So remember line is 2 points. It has 4 lines. So 4 year square, 2 year line, 2 year line, 2 year line, 2 year is line, okay, 2 year. 5 year he has bladder control. Remember bladder, what is the shape of bladder? What is the shape of bladder? 5 year bladder control na. What the shape of bladder? Bladder shape. Bladder shape. What is the bladder shape? What is the bladder shape? Tell me. Tell me bladder shape. Triangle. So triangle. Draw triangle. They are all draw. Draw triangle. Okay. And hexagon has 6 sides. 6 sides. So remember 2 points line, 2 year. So 2 year he make a line, 2 year. 4 year square which has 4 side, and 6 year hexagon 6 side. So 2 points 2 year, 2 points 2 year, 4 is 4 year, 6 is 6 year. 5 year bladder control, and bladder is what shape? Obviously bladder is triangular shape, so it is triangle at 5 year. And at 3 year he is able to run tricycle, and child run straight on circle. So 3 साल में circle. So 3 year circle. Okay, 3 year circle. So circle has 3 part na. What 3 part? It has a radius, it has a what area and perimeter something. Okay, so are you clear? So 3 year circle. So let's divide it very fast. Okay, line, circle. So I'll write, you tell me. Okay, line, circle, square, triangle, and hexagon. So tell me line, circle, square, triangle, hexagon. So what age he can make a line? What age he can make a line? What age he can make a line? Tell me. Very good. 1 2 3. So 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. So 2 3 4 5 6. So 2 3 4 5 6. Very good. Okay, and last thing, tower of cubes. Tower of cubes. Very good. Okay, all are right. Tower of cubes. So remember 2 cube,
6 cube and 10 cubes. So remember, it is 15 month where he is able to hold the cup. Remember cup, so cup and cube, cup and cube. 6 is 2 year and this is 3 year. So remember 15, 1.5, 2, this, okay. So 2, 6, 10. You have to mark this up, okay. So we've done all the milestone. One question is sure. It took, yes, I know 30-35 minutes, but you have to remember this, okay. I could do chanting, but I try to explain you. So now you'll not forget 3, 6, 9, 12 is a very simple formula. 3, 6, 9, 12. This formula. If you use this formula for speech, 3 is what? Ku. 6 is what? Mono. 9 is what? By. 12 is what? Sentence. 2, 3 words. And 24 is sentence, okay. If you use this formula for what? 6, 3, 6, 9, 12. So 3 neck, 6 and 8 sit, 9 and 12 stand, and 12 and 15 walk. You know this. And at 15 and 18 run, and 24 is jump. मोटर डन. देख रहे हो कितने फास्ट हो गया अब. मोटर डन. ये मैं कराऊं चैंटिंग में तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपके. आई एक्सप्लेन दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट वेरी वेरी वेल. वेरी गुड, ओके. 69 नहीं है, गुड डॉक्टर इज 68. नाउ हो गया. देन वी लर्न द सोशल. सो 1.5, 3, 6, 9, 12. So 1.5, 3, 6. Smile. This is social. Mom mirror. This is bye bye. This is peek. Peekaboo. Easy. Peekaboo. 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 This is peekaboo. And what are the stranger in this? Anxiety, stranger, and separation. Stranger is what age? Stranger. Stranger. Stranger is what age? Stranger. 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 It is 7th month. And this is 15th month. Remember? 14 and 15. 14, 15. 14, 14. Okay. And also what is there here? Okay, clear? And then gender, 3 year, 4 year, 5 year. What is there at 3 years? 3 years, 3 years, 3 years. I'm asking 3 years. So I think anxiety कोई नहीं भूलने वाला. I think you all are now experts of anxiety. Tell me. Yes, 3 color, gender and name. Color, gender, name. Also circle, tricycle. Okay. 4 year, 4 year, 4 year. Bowel. And this is bladder. So we have done this thing perfectly. You are all masters of this topic. Which topic? Milestones. Which topic? Milestone. One question will surely come from here. Okay. Now we are discussing something called jaundice. Jaundice. Okay. So jaundice. What is jaundice? It is yellow pigmentation of skin and sclera. Sclera is eye. Okay. Skin and sclera. Okay. Clear? Skin and sclera. Okay. Skin and sclera. Okay. Clear? And if urine, call uric jaundice, ZX. And if urine normal color, are called uric. So understand once again, what is jaundice? What is jaundice? Jaundice is yellow pigmentation. What is jaundice? Yellow pigmentation of what? Skin and sclera. Skin and sclera. If urine, call uric. कैसे याद करेंगे? Call. Call means what? Bile ना? Bile. Bilirubin. Uric is in urine. Call uric means in urine. Where is urine का yellow? Okay, इसको उल्टा करना था. Okay. So call uric. कैसे याद करेंगे? Green. Bile is green. Bile is green and urine is urine. So alcoholic means non-yellow. Okay. So why? The reason is simple. It is because of what? Bilirubin. Bilirubin. So because of bilirubin. Because of bilirubin. So if there is a pigmentation yellow, it is because of increased bilirubin. Now why urine can be this?
It is because of conjugated bilirubin, which is water soluble, and this is unconjugated, which is, yes, it is water soluble, and it is seen in, yes, post hepatic or obstructive jaundice. I told you I'll discuss jaundice in class, medicine class. I told. So obstructive jaundice, what happens? The liver conjugate, but is not excreted in the feces. So that's why it comes to blood. So that's why if urine is yellow, it is obstructive jaundice. If not, it is unconjugated. Now let's discuss. So in children it's mostly unconjugated. So remember, in fetal life, fetal life, okay, fetal life, RBC have HbF, okay. Now HbF is good in fetal life, but not good after the fetal life. They are not good after fetal life. So at birth we need which are hemoglobin? Adult, this fetal hemoglobin. So now need adult hemoglobin, HbA. So now what happened? Bone marrow does a transition. It stopped making HbF. It still makes small amounts, but mainly make HbA. So therefore the old RBC which contain the HbF are broken down. So that is why liver and spleen break old RBC containing HbF, called as hemolysis. And this hemolysis release what? Heme, and ultimately release heme plus iron, and this heme in liver become bilirubin. It become bilirubin, okay. And liver do conjugation also, okay. So that's why post hepatic, that is liver, will do conjugated bilirubin. So that make bilirubin. So this increased bilirubin causes jaundice of newborn. Let's start the story again. What is the hemoglobin present in the fetus? HbF. So fetal life, HbF. But after birth, at birth, you need which one? We need adult hemoglobin, HbA. So what do we need? We need HbA. So what do we need? HbA. Are you clear? So we need HbA. Are you clear? So HbA is needed. So I hope it's clear. Fine. Okay. HbA, okay. So that's why you break the old RBC called as hemolysis, which release iron heme. This iron is used for making what? HbA, reuse. And the heme is converted to bilirubin, and liver do conjugation, so that it become what? It become this, and this is water soluble, removed by kidney. So now what happens? Conjugation, and kidneys can remove. Kidneys can remove water soluble conjugated bilirubin. So that is why this jaundice is primarily which one? Unconjugated. Now first is, it is two type, okay. So it could be physiological, pathological, pathological. So remember, pathological is like a unwanted guest. कौन सा guest है ये? Unwanted guest, बिन बुलाया मेहमान. So how to remember? It's a unwanted guest. It's which guest?
unwanted guest. Which guest? Unwanted guest. So who's the unwanted guest? Yes, it is pathological jaundice, which is unwanted guest. Unwanted guest. Okay, are you clear here? So who's the unwanted? Pathological, pathological, pathological. So now comes a question. If it is unwanted guest, you want it to have what? So first let me tell you, a normal guest come after information. So it's a good guest, and good guest inform and then come. So he will inform, can I come tomorrow? Can I come tomorrow? You say yes or no. So that's why it appear after 24 hours. Appear after 24 hours. That is one day. So like normal guest, he say, can I come tomorrow? That is one day after 24 hours later, you say yes. But pathological guest, he comes same day. Ring the bell, turn, turn, you open, अरे मैं आ गया, मतलब बिना बताया, मतलब obviously. So that's why it is within 24 hours of birth. So which jaundice is present within 24 hours? Yes, it is unwanted, pathological. Okay. Then normal guest leave in a week. Leave in week, है ना, 7 दिन में. तो ये क्या होता है? It disappear within 7 days. That is 1 week. Okay. Max 2 weeks. कभी कभी 2 हफ्ता. It is, so it lasts more than 1 week for sure, and can be 3-4 weeks. So what is less than 1 week? Less than 1 week is physiological more. Okay. Then the daily rise in bilirubin will be very less. So daily rise in bilirubin, like daily he cause the expenditure of 500 रुपए खा जाता है. Less than 5 milligram percent. There is more than 5 milligram percent. More than 5 milligram percent. So more than 5. So what is the case? Less than 5, more than 5. 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 Okay, per day. Okay, per day. Okay, and total bilirubin is less than 15 milligram. So total is less than 15. Okay, so on average you stay for 3 days. 7 is max, 3 days, so that is 15. It is more than, so total is more than 15 milligram percent. So please remember with me the very simple story of jaundice. How do you differentiate? A mother come to you with baby yellow. So baby is yellow. So yellow skin. So yellow skin baby. And you now ask a history. When do you see baby getting yellow? So mother say पैदा ही येलो हुआ था, तो पीला पीला ही पैदा हुआ था, पीला पीला. So he say no, he was not yellow at the birth, and after 2 days I see. So that's why if it is within 24 hours, it's pathological. So now let us, what are the 4 feature of patho? Patho 4 feature बता दो बच्चों. पैथो 4 फीचर बोलो. ये बच्चे फिर गायब हो गए, अटेंडेंस कम हो जाती है कई बार क्लास की. मुझे लगता है बच्चे पता नहीं क्या चाहते हैं, बिना पढ़े पास होना, एंड वो पॉसिबल नहीं है. फिर से बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट पास विदाउट स्टडिंग. ओके, दैट्स अ सिंपल रूल. ओके, they can make paper as easy as possible, but still people will not pass if they are not doing it. Okay, चलो बताओ. So patho 4 feature. Patho 4 features. Tell me. First is सबसे important, within 24 hours. Within 24 hours. How much? Within 24. Very very good. Okay. देखो white stool is in both, so don't say about this. Okay. चलो. So within 24 hours. Okay. Very good. Within. Then yes, more than 1 week. More than 1 week. Then daily 5 milligram percent, and total more than 15. बस इसी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आर यू क्लियर? वेरी गुड. ट्रीटमेंट फिजियो jaundice, no need, no treatment, just reassure the mother. क्या बोलना है?
सबको ठीक है, बिंदास है, जबरदस्त है, कुछ नहीं, आपका बच्चा हेल्दी है, बड़ा होके एमसीआई पास करेगा, तो क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, he will become but very healthy kid and he will, yes, attend Dr. Ashish class, so he will grow up well. Okay, he will do MBBS, okay, any place, India, foreign, whatever, and attend Dr. Ashish class, so don't worry भाई, जो भी है मैं पढ़ाता सबको, इंडियन फॉरेन कोई भी हो, इवन इंडिया के बाहर, डॉक्टर आशीष क्लास, सो बी हैप्पी। डन 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 डन। ओके, नाउ लेट डिस्कस पैथोलॉजिकल, लेट डिस्कस पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट। सो पैथो में सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है। द मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन इज इट बिलीरुबिन कैन रीच brain, can reach brain, okay, due to poor blood brain barrier, poor blood brain barrier, and it causes what, brain to have damage called as kernicterus. There is a risk factor called as kernicterus, kernicterus, so kernicterus, okay, तो क्या करेगा, निक ब्रेन की बजा देगा, kernicterus, okay, so that is why pathological is treated, so we need to give treatment. So first and the best is phototherapy. Phototherapy. So the best is phototherapy. Phototherapy. How? UV radiation, which we use UV radiation. So UV ultraviolet. It convert. So क्या करेंगे, UV light मारेंगे, क्या मारेंगे, UV light. So it convert bilirubin टू लूमीरुबिन। तो कैसे याद करेंगे, देखो बिल्ली थी, लाइट पड़ी तो लुम्मी हो गई, है ना, बिल्ली रात में आती है ना, अंधेरे में आती है, पुसी कैट, सो बिल्ली पुसी कैट अंधेरे में आती है नाइट में, सो लाइट पड़ी तो क्या बन गई वो, लुमी, सो क्या बन गया वो, यस लुमी, तो लाइट मतलब लुमी, लुमी मीन्स लाइट, एंड इट इज वाटर सॉल्युबल, दिस इज वाटर सॉल्युबल, it is water soluble, kidneys can remove, तो क्या होगा, so that's why extra bilirubin is removed in urine, so kidney will remove where, in the urine, so now it is there or no longer there, so it is no longer present, okay, so it is no longer present, okay, remove, so kidneys will remove, okay. If it doesn't work, we will now be depending on what, we will do exchange transfusion, exchange transfusion, clear, so exchange transfusion, okay, and if that also doesn't work, we can use drugs which are enzyme inducers drugs like barbiturates, which one, phenobarbital, barbitone या barbital, it is the enzyme inducer, liver, so make the liver metabolize more bilirubin, so either we do exchange transfusion and remove the bilirubin, or we induce the liver and this, but remember one very important, they are contraindicated in porphyria, exam question, contraindicated in porphyria, ऑब्वियसली बात है, यस porphyria याद रहेगा। नाउ हाउ डू यू नो द लेवल ऑफ bilirubin without looking at the bilirubin level, so you can either do what, we can do a bilirubin level. What is the problem in this, problem is if you are checking the bilirubin level, the biggest problem is we sometimes don't have in village, so that's why we have for bilirubin level, for bilirubin we can use, okay, we can use Cramer's rule, we can use the Cramer's rule, so what rule we can use, Cramer's rule, so what we use,
Cramer's rule is used. Okay, so remember it is by color of skin, color of skin. So remember a very simple thing, face. So face has how many senses? Face. So face has how many senses? 5. You can see, smell, hear, taste and touch. So 5 senses. So 5 milligram per cent. So if at face, lips, nose, you see the yellowness. So what is the level? It is 5 milligram per cent. 5. Okay. Then if you see, it is at which area? It is at the chest or lower abdomen. It is what? It is chest and the abdomen. It is 10. Remember, it is 10. It is 10. 10 milligram, up to 10. Okay, up to 10. Up to 10. Okay. If it reaches the hands, okay, or the legs. So I'll just make a green color, yellow again. Okay. So this is what? Chest. So I'll use a different yellow, darker yellow. This is darker yellow. This is chest and abdomen. This is 10. 10. Okay. 10. Okay. 10, 10, 10. If it reaches your which areas? The, yes, legs, arms and legs. Arm and leg, this area. So even more, this area. So this is 10 to 15. Okay. And remember, now it wrote even the palms and sole. So palm and soles. So how many fingers are there? 5, 5, 5 and 5, 5 and 5. So total how many fingers are there? 20 fingers. So that is 15 to 20 milligram per cent. So it is baby 15 to 20 milligram per cent. Completely dark yellow. Easy. So let's start the Cramer's rule and you should all be able to tell me. So what are the Cramer's rule features? So if face 5 milligram, face is 5, chest is up to 10, chest is up to 10, abdomen is, chest and abdomen is 10. So I'll write down with this color, 5 senses 5, palm and sole 20, up to 20. So palm and sole 20, face 5. So 5, 20, chest, abdomen 10, this is 15, 15. So 15 is hand and this. So you can make a assessment of jaundice by looking at the color. Okay. Yes. Chalo. So we will do remaining in the next session. Which part? The CNS, CVS will do in the next, and respiratory we do in the next class, and also neonatology. So we'll take 3-hour class and finish the pediatric because there is a session after this 8 o'clock. So that's why I have to finish because there is 8 p.m. MS session. So do join in. Okay. So I'll say bye bye. Take care. Okay. Chalo. I hope you enjoyed and you'll keep enjoying it all your life. Chalo bachcho. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. सबको bye bye. चलो. Take care. Bye bye.